Hi everyone, welcome to the channel. I am AKSRajveer, your Academy and YouTube educator. So learners, in this class we are going to cover part 3 of Glossary of Literary Terms by M.H. Abraham. So we are studying literary terms in English literature. And learners, 500 best series that is already running on an Academy platform. So you can join this series free of cost without any kind of payment. Just download an Academy the learning application and follow me there by searching AKS Rajveer. The timing is 4 to 5 p.m. daily. And learners, this is the third video on literary terms. And if you are not getting my notification of my Academy classes or YouTube classes, so you can join me on Telegram so that you can receive all the notification related to my videos on Academy and on YouTube. Learners, in today's this lecture, I'm going to discuss anti-hero, and then we have antithesis, and then archaism. So, and another point. So, learners, we are going to discuss. Just a minute. Wait a minute, please. Yeah. So, we are going to discuss anti-hero, antithesis, archaism, and then archetypal criticism and portmanteau words. So learners, in 5 points को मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के, और जो ए लेटर सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा लर्नर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी हीरो. हु इज एन एंटी हीरो? सो दोस्तों, जब आप हीरो की बात करते हैं, हीरो की, सो लर्नर्स, हीरो की बात जब एरिस्टोटल ने की, सो एरिस्टोटल ने क्या कहा हीरो के बारे में कि एक हायर स्टेट से होना चाहिए हीरो को. ओके, क्योंकि जब उसका जो डाउनफॉल है, बिकॉज जो किंग, प्रिंस या फिर जो ग्रेट पर्सनालिटी है, सो उसकी डेथ विल अराउज पिटी एंड फियर ऑन ऑडियंस. ओके, सो जो हीरो की एक ट्रेडिशनल हीरो की बात थी कि यस, मोरली करेक्ट होगा, कई सारी क्वालिटीज होंगी, सो उसके अपोजिट, एंड दिस कॉन्सेप्ट, जो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर एंटी हीरो जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर हुआ. सो इन एंटी हीरो आप किसे कह सकते हैं? सो दोस्तों, आप देखेंगे कि जिसमें कन्वेंशनल हीरोइक एट्रीब्यूट्स की क्या होगी, लैक ऑफ कन्वेंशनल हीरोइक एट्रीब्यूट्स. एंड दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ डिसइल्यूजन, जहां पर डिसइल्यूजन, लाइक यू हैव द कैरेक्टर लाइक स्ट्रागन एंड व्लादिमीर in Waiting for Godot by सैमुअल बैकेट. सो दोस्तों, इस टाइप का एंटी हीरो आप देख सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर एंटी हीरो की बात किया जाए, सो एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको मिलते हैं, सो ही इज हम्बर्ट in Nabokov's novel. So this is Lolita by Vladimir Nabokov. And learners, अगर मैं बात करूं व्लादिमीर नबोकोव की इस वर्क लॉलिता की, so in this particular work you can see Professor Humbert, and he is in love with his you can say own daughter. Okay, so that is the characteristic of anti-hero. Daniel Defoe's Mole Flander, this is also, so Mole Flander in this particular work, you can say, yes, thief and prostitute. So she is a thief and as well as a prostitute. So this is the quality of an anti-hero. So John Wayne's Hurry On Down, this work also contains anti-hero. And Kingsley Ames's Lucky Jim, 1954. So this is also one of the best example of anti-hero. And then you have Yosarin in Joseph Hiller's Catch 22. So Yosarin is also a character in Joseph Hiller's Catch 22. So that is also one of the best example of anti-hero. And Tyrone Slothrop. So दोस्तों आप देख सकते हैं थॉमस पिचन का जो वर्क है Gravity Rainbow 1973. So in this particular work you can see Tyrone Slothrop. So he is a wonderful example of anti-hero. And Samuel Beckett's Stragan and Vladimir. And Ham is also an anti-hero in the game by Samuel Beckett. So learners, you can see कि anti-hero के ये बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए. So मैंने इतने सारे एग्जांपल क्यों दिए? Because ये really important है. कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टर है किस क्वालिटी के साथ है. So yes, anti-heroic क्वालिटी है इस कैरेक्टर में. So ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. Now learners, see the next term. So this is antithesis.
सो दोस्तों जब हम एंटीथेसिस की बात करते हैं, सो दिस इज व्हाट की डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स, जहां पर आपको डायरेक्ट अपोजिट मिल जाए समवन और समथिंग, एंड इट मे बी अ पर्सन और थिंग। सो दोस्तों पर्सन और थिंग दोनों के लिए अप्लाई होता है, एंड विद द एग्जांपल हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। Learners, this is a wonderful example. Man proposes, God disposes. So learners, man क्या करता है? Propose करता है and God dispose करता है. So this is a wonderful example of antithesis. And this source is though the source of this sentence is unknown, but man proposes, God disposes. It's a wonderful example of antithesis. Now learners, love is an ideal thing, but marriage are real. So who says? So Goethe says. Love is an ideal, but marriage are real. So you can see a person or thing is the direct opposite of someone or something else. So दोस्तों बिल्कुल marriage love क्या है ideal है, but marriage क्या है real है. So this is the opposition you can see in the sentence. Another wonderful example from Alexander Pope's writing. So yes, you have to err is human to forgive divine. To err is human and to forgive divine. So learners, err means गलती and forgive means माफ कर देना, क्षमा कर देना. So this is what कि जो human being है, they are going to make mistakes, and who is going to forgive you? So God is there to forgive you. So this is a wonderful example from Alexander Pope's writing. Another important example we have Alexander Pope's epistle to Dr. Arbuthnot. So this is willing to bound and yet afraid to strike. And one more example we have from Rasselas. So this is by Dr. Johnson. So this is marriage has many pains. Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures. So pain and pleasures. So thus these words are going to create a kind of antithesis. This is what. So learners, I think कि ये term भी आपको clear हो गया होगा. Now, archaism. So learners, archaism, what is the meaning of archaism? So learners, आप देखते हैं कि हम कई बार कहते हैं कि archaic words का use. और कैसे? क्योंकि दोस्तों आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड देखे होंगे, कहीं कहीं पर आपने दो वर्ड्स का यूज बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा. दिस इज दाउ एंड दी. सो लर्नर्स जो मतलब ओल्ड इंग्लिश थी, सो इसमें इनका मतलब है यू. ओके, दाउ फॉर यू कैन से यस, अगर कहा जाए सो दाउ एंड दी, सो एक तो मेल एंड दूसरा फीमेल. सो लर्नर्स, दाउ एंड दी एंड नाउ यू, कि आपकी मॉडर्न इंग्लिश में यू वर्ड ही आपको मिलता है. ओके, so दोस्तों archaic word, a thing that is very old or old fashioned, especially an archaic word or style of language or art. So archaism की जब हम बात करते हैं in literature, so this is the term की जो applied होता है किसके लिए? Writing के लिए. So for example, Spencer ने लिखा Fairy Queen and he has yes, स्पेंसर ने बहुत सारे archaic words को यूज किया है अपने वर्क Fairy Queen में. So this is the use of archaism. Keats ने दोस्तों Grecian urn लिखा, and in Grecian urn you can see the use of archaic word with breed of marble men and maidens are overwrought. So learners, this is the example of archaism. And then Chaucer's Canterbury Tales. So on that particular work, on Chaucer's work, you can see a number of archaic words are there. And then another one more example we have, Wordsworth has written a work London 1802, and this is also known as Milton poem. And learners, in this particular work, what he says, thy soul was like a star and dwelt apart. So this is the word that, yes, this is the use of archaism. This is the use of archaism. Okay, learners. So in literature, archaism means the use of the old word, old-fashioned word, you can say, or archaic word. Okay, learners, clear hoga. Now, another we have important term. So this is archetypal literary criticism or archetypal criticism, or what is archetype. So learners, this in this kind of literary theory, what you can see, so a text by focusing on recurring myth and archetype. So एक text को कैसे interpret किया जाता है? In this particular theory, you can see the interpretation of a text by focusing on recurring myth and archetypes. For example, you have Greek art. So अगर देखा जाए कि वो क्या meaning है इसकी archetype की. So archetype की जो meaning है वो है, देखिए, arch means होता है beginning और typos means होता है imprint. So this is what की beginning imprints. So from here you can easily understand those narrative, then symbols, images, and different kind of characters
where so in beginning, so those are the beginning imprint. So दोस्तों prominent practitioner भी हैं आपके जो archetypal criticism में आपको देखने को मिल सकते हैं. So in archetypal criticism you have a number of names like Maud Bodkin, really important, and then yes, G. Wilson Knight and Robert Graves and Philip Wheelwright, Richard Chase, Leslie Fiedler, and Joseph Campbell. So these are important work, and never forget about Northrop Frye because he has written a work that is Anatomy of Criticism 1957. This was appeared in the year 1957. So Northrop Frye is really awesome. This is the awesome work by Northrop Frye. Then another we have Maud Bodkin. So this is archetypal pattern in poetry 1934. And then James G. Fraser जिन्होंने लिखा था The Golden Bow, really important. The Golden Bow even you can see on Wasteland. So जो यहाँ से references different type के लिए गए. Okay, learners. So and then we have another important term. So this is portmanteau. So portmanteau. What is the meaning of portmanteau? So portmanteau word की अगर बात किया जाए, so it is a kind of literary device जहां पर दोस्तों two or more, ये एक linguistic term भी माना जाता है, consider किया जाता है, जहां पर two और more words को क्या किया जाता है, एक साथ ज्वाइन किया जाता है जिससे कि एक न्यू वर्ड बन सके. दैट इज नोन एज portmanteau वर्ड. ओके लर्नर्स. एंड देन जो दोस्तों जैसे जो दो वर्ड्स को मिलकर के एक न्यू वर्ड बनेगा, सो वो वर्ड कैसा होगा, वो एक सिंगल, एक ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल नहीं होगा, वो दोनों की मीनिंग भी कंटेन करेगा. सो दिस इज व्हाट. सो लर्नर्स अगर अर्लियर इसके एग्जांपल को देखें कि अर्लियर कहां पर हमें यूज मिलता है portmanteau वर्ड्स का. सो दोस्तों portmanteau जो वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज किया गया था देखा जाए, सो हम्प्टी डम्प्टी जो लेविस कैरल ने दोस्तों वर्क लिखा है through the looking glass, really a wonderful work by Lewis Carroll. So दोस्तों लेविस कैरल ने यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं डिफरेंट, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द ओरिजिन ऑफ portmanteau वर्ड्स. Now see learners, one of the best examples. So this is the example of smog, S-M-O-G. We have S-M-O-G. And this is the combination of smog, S-M-O-K-E, and as well as you can say fog. So smog and fog is equal to smog. So this is what, this is a kind of portmanteau word. So learners, आपको बिल्कुल clear हो गया होगा. इवन आप देख सकते हैं दोस्तों कि यस जैसे स्पॉक, सो यू कैन सी फ्रॉम स्पून एंड फॉक, spoon and fork is equal to, so this is spock, so this is also portmanteau word. You have mockumentary, so from mock and documentary, so that is mockumentary. You have brunch, so breakfast and lunch is equal to brunch. So this is what learners portmanteau word that is known as. So learners, आपको सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए. मैंने 5 आपके साथ क्लियर किया. In my upcoming video, I will discuss with you. I will be discussing with you. So later B series, and learners, do not forget to subscribe me, and you can also see these my ongoing courses on at an academy. And you said you can subscribe me there, and my crash course is also coming for June 2020. So learners, do not wait. This is the right time to join my complete course there. So you can access, so that you can access paper 1 and as well as paper 2. Learners, this is my crash course with practice session. So learners, crash course एक side and एक side practice session. So with the help of practice, everything will be revised. And crash course में दोस्तों bullet points के साथ, और अगर कहा जाए so important English literature के जो भी important points है, वो सभी important points के साथ all the 10 units discuss की जाएंगी. So learners, ये मेरा plan होगा. इवन की अमेरिकन राइटिंग, इंडियन राइटिंग एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हर एक पार्ट को मैं कवर करने वाला हूं. So learners, please use my referral code. This is AKSRajveer. By using this referral code, you are going to get 10% extra off. And if you are going to subscribe my course, so please subscribe at least for 3 months so that you can cover everything. And this is the right time कि जब आप join करें. अगर if you are going to subscribe for 1 month, so then I think this will be the wasting of money, because आप complete cover भी नहीं कर पाएंगे और वो problems भी आ जाती हैं. And then 6-month plan is also there, 12-month plan is also there, and 24-month plan. So 12-month and 24-month plans, if you are thinking कि आप थोड़ा कमजोर हैं, अगर थोड़ा पढ़ेंगे, so then आपको काफी अच्छा knowledge होगा. So this is really awesome plan for this is really awesome plan for you.
So learners, thank you so much. Stay tuned with me till the end of this video. वैसे भी आप stay tuned रहे and then please subscribe me and press the bell icon and check कीजिए कि क्या आपके पूरे नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है या नहीं. So learners, अगली क्लास में मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी और फिर से मैं किसी आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ. So तब तक के लिए नमस्कार लर्नर्स.